and here we have to put battery. Why? Because it is electrolytic cell, है ना? Here the solution, it requires certain electricity for the reaction to occur. अच्छा, देखते हैं यहाँ पे. So this will be the positive end. This will be the negative end. Here we have Ag positive and NO3 negative. Fine, Ag positive and NO3 negative. These electrodes, these are of what? ये किसके? सिल्वर के हैं, Ag electrodes. ठीक है. Now, one thing we have learned previously, that whenever you dip a metal on the solution of its own ion, what do we do, guys? We dip a metal in the solution of its own ions. Then there is a reaction that can occur, which is like this. Metal can get transformed to Mn positive plus some electrons, n electrons. Okay. So either if the metal has higher oxidation potential, positive oxidation potential, तो ये reaction होगी. If the metal is having reduction potential ज़्यादा, then this reaction will occur. All of you remember this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. So similar thing will happen with Ag also. ठीक है. Similar thing will happen with Ag also. क्या होगा? ध्यान से देखिए जरा. First of all, the Ag is going to give you Ag positive plus 1 electron, and then this decay. What will happen in anode? Ag will give Ag positive. या फिर ऐसे पहले कैथोड लिखते हैं ना, पहले कैथोड ही लिखते हैं. In cathode, Ag positive will eat 1 electron and become Ag. ठीक है. In anode, this reaction will occur. Ag will give you Ag positive plus 1 electron. NO3 का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं रहेगा, because we have the metal electrode which is itself what? Which is itself reactor. Write this down. तो यहाँ पे बेसिकली फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैथोड से आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल इज गोइंग टू बी, नहीं, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है. एनोड में आपके पास क्या हो रहा है? Ag इज कमिंग फ्रॉम द एनोड एंड गोइंग टू द कैथोड. ऐसी इस तरह से रिएक्शन. ठीक है. इसको कॉपी कर लीजिए. इस बड़ी की एप्लीकेशन, इसका वो भी लिखा देंगे. Raise your hand once you're done. Done. Everyone is done. ठीक है. ध्यान से देखिए जरा. Generally this is used for the purification of silver. Let us suppose, ध्यान से देखिएगा. ठीक है ना. I need answers. पता नहीं क्यों guys try to answer ना when I am speaking. This Ag positive is coming from anode. Fine.
So in anode, what do we keep? We keep impure silver. ठीक है ना? What are we keeping here? We are keeping impure silver. Now, from impure silver, what will happen? Only the Ag ions, only the silver ions will go to the solution. And from solution, what will happen? This Ag positive will get converted to Ag. देखिए anode से क्या हो रहा है? Ag से Ag positive. In the cathode, what you will be getting? In the cathode, you will be getting. Here we keep pure Ag. So slowly, what happens? The impure silver, the rod which is having impure silver, slowly the Ag plus ion gets removed from the impure silver. And impure silver मतलब समझिए Ag plus will be always pure. Ag it is having some other metal, मान लीजिए कॉपर वगैरह, तो कॉपर तो नीचे चला जाएगा, कॉपर will not go to the Ag electrode. ठीक है? तो Ag plus ion will be slowly depositing in the, will be slowly getting deposited in the cathode. ठीक है? Make sense? Yes or no? Please tell me. Impure वाले rod से Ag positive निकलेगा, and that Ag positive will go to the cathode and then get deposited in the pure form of Ag. Make sense? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है? So slowly what will happen? The mass of anode will decrease and the mass of cathode will increase. Increase. ठीक है? So since you have written till here, I can write a point used for purification of silver. अच्छा, उसके बाद एक दो पॉइंट और लिखे थे याद रखने के लिए. मास ऑफ एनोड decreases and mass of cathode increases with time. ठीक है? Similar reaction can occur if you have, कितना हो गया ये? So sixth ना, seventh लिखिएगा. Aqueous copper sulfate with copper electrode. ठीक है? तो same thing anode में you will have copper solid से copper 2 plus 2 electron. In the cathode you will have copper 2 plus, we take 2 electrons and get converted to copper solid. ठीक है? तो वही एनोड से कॉपर निकलेगा, कैथोड में जाकर चिपक जाएगा. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Done, sir. जी बताएं. ठीक है, चलिए. अब आप लोग टॉपिक लिखिएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या इस टॉपिक को और एक नाम है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है? ठीक है, जरा क्वांटिटेटिव होगा ना, क्वालिटेटिव नहीं हो. क्वालिटेटिव तो कर लिया हमने. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ electrolysis, or this could be also known as Faraday's law. ठीक है? Faraday's law of electrolysis.
ये लॉ वगैरह जो है इनको आप लाइक प्लीज कीप राइटिंग विथ मी, ठीक है। दे विल आइदर आस्क यू टू राइट द लॉ एज इट इज, तो आप उस लॉ को लिख दीजिएगा एज इट इज, फाइन। बेसिकली दे विल बी मोस्ट प्रोबेबली आस्किंग यू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का तरीका हम आप लोग बता देंगे जिनका लॉ से कुछ खास लेना देना नहीं है। आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स, है ना, एंड दैट विल गिव यू द आंसर्स फॉर ऑल द न्यूमेरिकल्स, फाइन। तो जो लॉ हम लिख रहे हैं इसमें वॉट एवर आई एम राइटिंग, प्लीज राइट इट एज इट इज, और देन यू हैव टू फोकस मोर ऑन द पार्ट वेयर आई teach you guys how to solve numericals, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है, दो लॉ है इसमें, फर्स्ट लॉ ही लिखाएंगे हम, सेकंड लॉ आप नोट अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट, प्लीज राइट विथ मी, द chemical substance the chemical substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the current passed and time। करंट पास्ट एंड टाइम, ठीक है। सो बेसिकली क्या करें, व्हाट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, mass of the substance is directly proportional to the time, so mass will be directly proportional to I into T, and if I put equal to sign I have to put a constant, and that constant is written as Z IT. And if you remember 10th standard math, or you are in 12th standard, so sorry, not math, physics, if you remember the 12th standard physics or the 10th standard physics, then you will remember IT is equal to the charge, है ना? So you can write M is equal to Z into Q also, fine. And Z, it is known as electrochemical equivalent, electrochemical equivalent. It is basically a extension of the equivalent concept, but don't worry too much about this electrochemical equivalent. बहुत ज़्यादा कुछ आपको numericals में काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना? We will do a few numericals and then you will understand more what is electrochemical equivalent actually, ठीक है ना? अभी आप इसे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. Try to understand just the terminologies and that's it. Now they can also ask what is electrochemical equivalent, तो बहुत ही आसान है. यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेंटेंस को, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे. प्लीज राइट विथ मी, द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और गैस लिबरेटेड ना जैसे भी, और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम of charge is passed through the electrolyte, है ना? ये दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डिफाइनिंग एनी कांस्टेंट, है ना, कि द साइड इन विच कांस्टेंट इज प्रेजेंट, उस साइड के वेरिएबल को आप 1 मान लीजिए, ठीक है। सो दिस Z विल बी इक्वल टू मास व्हेन Q is equal to 1. Make sense, yes or no? I hope you have done this type of defining in solution chapter also. क्या ख्याल है गाइस, याद आया सबको? हाँ या ना बताएं. हाँ सर. Does this make sense? Yes sir. ठीक है, चलिए तो अब इसको जरा अच्छे से कॉपी कर लीजिए. रेज योर हैंड इफ यू आर डन, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट वेयर वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स वगैरह के बाद ना आई विल एक्सप्लेन यू गाइस लाइक ये क्या बला है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, वो हम आप लोगों को समझा देंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. रेज योर हैंड इफ यू आर डन.
waiting for Khadija and Siddiqa. Just waiting for Khadija now. ठीक है चलो, अब ध्यान से देखिएगा जरा, थोड़ा माइक ऑन भी कर लीजिए प्लीज. दिस इज बेसिकली फॉर न्यूमेरिकल्स. ठीक है. Q it is equal to I into T, but this formula it is also based on certain units. So can somebody tell me like what should be the unit of charge for this particular equation? एम्पियर. एम्पियर इज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है चलिए, एक आ गया एम्पियर. और टाइम किस में होना चाहिए? टाइम सेकंड किस में होना चाहिए? सेकंड्स में होना चाहिए. तो क्यू किस में आएगा? एम्पियर पर सेकंड. कूलम. एम्पियर पर सेकंड. अरे ये एम्पियर पर सेकंड, व्हाट इज द क्यू के लिए कूलम्स होता है ना, कूलम. चार्ज का यूनिट कूलम होता है भाई. कूलम. जी 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 जी. देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो C इज इक्वल टू एस याद रखें ना, Q इज इक्वल टू आई टी को भूल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली if you remember Q is equal to IT, then you will forget that you have to change it in, you have been given time in 20 minutes. आप भूल जाइएगा कि उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है. That is why we will remember it as C is equal to S, so that you remember the units also, है ना. C is what? This is coulomb. COLOUMB है ना. And this A is in ampere. और S का मतलब क्या है? S का मतलब है सेकंड. ठीक है. एक ये फॉर्मूला हुआ. ठीक है, एक हुआ ये फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला जो आप लोग याद रखना है फैराडे के लिए. फैराडे, इसको याद रख लीजिएगा, मोल्स इनटू डेल्टा ओएस. ये तो वही फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वाला. इफ यू गाइस रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स इनटू डेल्टा ओएस, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. याद आया नहीं याद आया? बोलो भाई. यस सर. है ना, फ्रॉम इक्वेशन. यस सर. नाउ द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू फैराडे. बस वही निकाल रहे हैं फैराडे. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू यूज, if I want to convert this whatever value we are getting in terms of coulomb, then जो भी यहाँ से वैल्यू आए ना, moles into delta S, this will give you some number multiplied by 96500 and you will get the answer in coulombs. So these are the only three equations that you need to remember. ठीक है. बेसिकली तो आपको फर्स्ट और सेकंड वाला ज्यादा काम आएगा, ये वाला आखिरी में एक बार काम आ जाएगा. ठीक है. अब हम लोग करते हैं सवाल. इवन इन एनसीईआरटी यू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. पहले एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सर ये So कॉपी write से this तो down. चाहिए. जी जी जी, कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए. रेज योर हैंड वंस यू डन. Waiting for Khadija and Siddiq. Khadija, am I audible? Khadija, यस सर. क्या है, कहाँ आप लास्ट क्लास में थे कि नहीं थे, सोल्यूशन वाली क्लास में? आई वाज सॉरी, जोर से बोलिए, क्या हो गया? देयर. यू वर देयर बट यू आर नॉट रिप्लाइंग. आपने आंसर आंसर कुछ नहीं भेजा, ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे बिल्कुल. आर यू नॉट फीलिंग वेल? नो सर. क्या हो गया, फीवर है? हाँ.
अच्छा ठीक है, चल ठीक है, तब आराम कीजिए, देखते रहिए बस। चलिए, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग डिडक्शन, है ना। ठीक है, सी हियर गाइस, आई विल डू द फर्स्ट वन फॉर यू, बाकी सारे ना आप लोग कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम तीसरा वाला कर देते हैं आप लोग के लिए, बिकॉज बाकी फिर तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, है ना। देखिए, सोल्यूशन है, बहुत आसान है। कहाँ से कहाँ जाना है, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव जाना है। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn हियर, x ले लिया आपने, प्लस 4 × -2 फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, बिकॉज दैट इज द चार्ज ऑन दी ओवरऑल स्पीशीज। X will be equal to 4 2 -8, -8 will go that side, it will become +8 -1, that is equal to x is equal to 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास +7 है, यहाँ पे आपके पास +2 है, तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 5। So we can write Faraday, it is equal to moles, कितना मोल है, 1 मोल, into what is the change in oxidation state, ये तो है ना फॉर्मूला, मोल मोल into इंटू डेल्टा ओ। OS, डेल्टा OS ना। ठीक है, यस तो सर। मोल कितने हैं, 1, डेल्टा OS कितना है, 5, ये हो गया 5 फैराडे। जनरली जब वो चार्ज पूछते हैं तो दे वांट द आंसर इन कूलम्स, बिकॉज वो क्यू पूछ रहे हैं, है ना। फैराडे इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ चार्ज इटसेल्फ, बट व्हेन दे से चार्ज चार्ज, तो फिर चार्ज मतलब वो कूलम्स से पूछेंगे, तो कूलम्स के लिए क्या लिख देंगे, 5 × 96500, मतलब मल्टी कर दीजिए, वो कूलम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए जरा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9 का आधा 4 8, अच्छा ऐसे ही कुछ आंसर आएगा, देखिए तो जरा। सही है सर, करेक्ट। बाय द वे, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली, आवाज वाज मेरी सही आ रही है, हाँ है ना। यस सर, हाँ। ठीक है, बाकी दो कीजिए आप लोग फिर, है ना, कर लेंगे ना बाकी दो। ALC बस वही 1 मोल सब में डेल्टा OS बिल्कुल दिख रहा हो, अच्छा ऐसे ही बता दीजिए जरा, इसमें कितना फैराडे होगा, इसमें कितना फैराडे होगा पहले वाले में, ऐसे ही बता सकते हैं आप लोग को, हमको लगता है 3 3 फैराडे, है ना, फिर कर लीजिएगा 3 × 96500, इसमें कितना फैराडे होगा बताइए जरा, हाउ मेनी फैराडे हियर, 2 2 फैराडे। 2 फैराडे, है ना, दिख रहा है बिल्कुल आप लोग को तो अब, है ना, × 96500, ठीक है ना। चलिए कॉपी कीजिए इसको, रेज योर हैंड वंस यू डन। डन सर। तो हो गया, वेटिंग फॉर खदीजा सद्दीका एंड यहिया का तो हो गया। जस्ट वेटिंग फॉर खदीजा नाउ। खदीजा आर यू डन, रेज योर हैंड वंस यू डन खदीजा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसे बताइए कौन सा करते हैं हम, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड फर्स्ट वाला और सर। सेकंड, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, FeO से Fe2O3, ठीक है ना। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, इट इज लाइक इफ इट इज विद एनीथिंग दैट इज हैविंग दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हमेशा -2 ही रहेगा, है ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज इन पेरोक्साइड या फिर वो क्लोरीन के साथ हो, फाइन। सो राइट नाउ ऑक्सीजन विल बी ऑलवेज व्हाट, विल बी ऑलवेज -2। वी हैव टू चेक फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe के लिए, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो कैलकुलेट हियर 2x plus 3 into -2 it is equal to 0, 2x because 2Fe, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 3 because the oxygen, -2 because it is oxygen, oxidation state होता है। So 2x will be equal to 3 to the 6, that side plus 6, x will be equal to 6 by 2, that is equal to 3। Fe यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी +2 होगा, माई बैड, है ना, -2 नहीं होगा, +2 होगा, है ना। ऑक्सीजन का -2, Fe का +2, यहाँ पे क्या है, +3 है। So we can see that delta OS it is equal to how much, 1, है ना। You don't need to balance it, याद रखिएगा, इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है आपको, बिकॉज आपको तो पहले से पता ना 1 मोल है, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी गिवन यू हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल, तो मोल आपके पास है, यहाँ से मोल मत निकालने लगेगा। Faraday will be equal to moles into delta OS, मोल कितना है 1, डेल्टा OS कितना है 1, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 1 फैराडे। इन कूलम्स पूछा हुआ है, तो आप निकाल लीजिएगा, इसके 196500 हो जाएगा इन कूलम्स, ठीक है, दिस विल बी द चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। बाकी नेक्स्ट वाला कीजिए। टेक 2 more minutes, है ना, क्या ख्याल है? आई थिंक इन 2 more minutes यू कैन सेंड द आंसर्स फॉर द नेक्स्ट वन। अभी तक कॉपी कर लिया होगा आपने। Here looking at your answer, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, जरा बताइएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कैलकुलेट किया है आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या? तो मैंने ऑक्सीजन वहाँ पर 2 था, तो मैंने नहीं वो नहीं नहीं, साइड का साफ साफ 2। बताइए सबसे पहले, एक एक सेकंड, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया आपने? ऑक्सीजन का सर। ऑक्सीजन का तो -2 होगा, उसके बाद हाँ,
हाँ, मैंने वो शायद H2O टू में एच माइनस, एच टू ठीक ओ है को समझ है। गए, ठीक ठीक देखिए, समझ गए, बच्चों को दिक्कत है ऑक्सीडेशन स्टेट में, H2O 2O2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हियर विल बी -2 और यहाँ पे 0, एलिमेंटल स्टेट में है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे भी 0, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के हिसाब से, इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वी असाइन पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे मान लीजिए अगर HF है, ठीक है, तो फ्लोरीन का -1 कैसे है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स, ओनली वन बॉन्ड, बट इफ आई हैव लेट अस सपोज, क्या एग्जांपल दें आप लोग को हम, जैसे C को मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन है, so because of this bond oxygen is -1 because oxygen is more electronegative, hydrogen is +1, because of this bond hydrogen is +1 because hydrogen is more less electronegative, oxygen के लिए -1, तो टोटल कितना हो गया, ऑक्सीजन -2, ठीक है, इस तरह से होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये दिस इज नॉट द राइट टाइम, रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो -2 and 0, delta OS is equal to how much? Change in oxidation state is equal to 2 and moles it is equal to 1. So we can say that charge will be equal to 2 Faraday, or we can write it as 2 into 96500. Can you copy this down? Make sense everyone? Yes or no? Please tell me. क्या सबको समझ में आया आया ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए। See, you will be having difficulty only in the calculation of oxidation state. Otherwise आपको दिक्कत नहीं आएगी। Conceptually is very easy for the in terms of numericals, ठीक है। कीजिए जरा, अगला सवाल हम दे रहे हैं आप लोग को, कॉपी करके हाथ रेस कीजिए, रेस योर हैंड वंस यू आर डन। वेटिंग फॉर नोहान सिद्दीका। जस्ट वेटिंग फॉर सिद्दीका नाउ। इफ यू गाइस, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स मी टू री एक्सप्लेन ना, तो प्लीज एक बार कह दीजिएगा, ठीक है, आई कैन री एक्सप्लेन, डोंट वरी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2? In this case they have not given you, not given us the moles, they have given us in grams। तो अब बच्चे परेशान होते हैं, सर मोल्स किसका निकालना है, कैल्शियम का निकालना है या CaCl2 का निकालना है? देन सिंपल आंसर इज जिसका दिया हो उसी का निकालना है, एक मास से निकालेंगे ना। व्हाट वी विल डू, हाउ विल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वी विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस मास। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
Okay, I'm sorry, I got a call. Yeah, where was I? So, huh. People get confused that we have to calculate the number of moles of CaCl2 or Ca. So simple answer is, what is given? We have been given Ca or CaCl2. We have been given the information of calcium. So we'll calculate the number of moles of calcium. Okay, first thing is that solution will be number of moles of calcium will be equal to 20 upon, what is the molar mass of calcium, guys? Tell me. 40, 40. है ना? This will be equal to 1 by 2. Now we will write the reaction. We have to get calcium from molten CaCl2. So we have CaCl2. From here we need to get calcium. ठीक है? So calcium will be +2. ठीक है? Now +2 आप लोग समझ में आ रहा है ना? Because Cl is -1, -1, -2. So calcium will be +2. Also it is group 2 element. That is why it will always be +2. Here it is 0. Delta OS will be equal to how much? Delta OS will be equal to 2. ठीक है? And number of moles we have already got. So Faraday will be equal to moles into delta OS. That is equal to 1 by 2 into 2. That is equal to 1 Faraday. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. All of you understood this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Chili, copy this down. Done, sir. ठीक है. Do this for aluminium. The molar mass of aluminium is 27. Yeah, is done. Yeah, shared the photo. Just give me a second here. 40 upon 27. ठीक है. Yes, very good. Very good. 4.4. Faraday में ही रखना है वैसे, by the way, है ना? We have to only keep it as Faraday, sir. Sorry. So, एक doubt था. When do we know we have to keep it in Faraday or in Coulomb? Question में specify करेगा क्या वो? क्वेश्चन में दिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा ना फैराडे, दैट इज वाई. ठीक है. ठीक है, देखिए मरियम, एवरीथिंग इज
मरियम है ना? हाँ मरियम, but keep things in fractions until and unless it is the last step. Yes मरियम, Okay, sir. keep everything in fraction, है ना? उसमें आप देखिएगा, I will solve this now, ठीक है? You सोल्यूशन में आपके पास क्या है? सेकेंड वन के लिए नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 40 दिया हुआ शायद ना, डिवाइड बाई 27, ऐसा ही है, ठीक है? तो 40/27 ही रखेंगे इसको, है ना? नाउ वी विल सी, वी हैव टू गो फ्रॉम Al to O3 to aluminium. So here the oxidation state of aluminium, if you calculate, it will be equal to +3, है ना? नहीं आ रहा तो करिए, हम कर देते हैं 2x + 3 into -2, it is equal to 0, 2x is equal to 6, x is equal to +3, +3 to 0, 40/27 multiplied by change in oxidation state कितना हो जाएगा? 3, तो 3 9 सा, करेक्ट? 27 एंड 40/9, ये चीज आप याद रख लीजिए। 1/9 क्या होता है? आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस, पता नहीं, 0.1 बार 111, 2/9 इज इक्वल टू 0.2222, ठीक है ना? तो 4/9 क्या हो जाएगा? 0.444, एंड 40 है तो 4.444 हो जाएगा, है ना? तो दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है? तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, it is fine, not a problem, but I hope you understand it is good if you use in fraction until and unless the last step. Please copy this down. I hope everyone is done writing. Yes or no? सबका हो गया? Yes, Is sir. everyone done writing? Now we will be using a combination of both the equations. लीजिए जरा, solution of Nc2 whole twice is electrolyzed between platinum electrode using current of 5 amperes for 20 minutes. What is the mass of Ni deposited at the cathode? ठीक है, कैसे करना सवाल को ध्यान से जरा। Solution. There are two parts. एक तो reaction से you will get some information and you will get some information from the ampere and time. तो reaction क्या हो रही है? Reaction is nickel nitrate to nickel. ठीक है ना? This is the reaction that is happening. So for this reaction, what I can write, Faraday is equal to moles into delta OS. Nitrate, it will be having -1 charge, है ना? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो here we are having 2 nitrate, तो -2 इसकी वजह से, and nickel 2 plus nickel will be having +2 state, है ना? And यहाँ पे 0. Right now we can say Faraday will be equal to moles के लिए क्या लिख सकते हैं? Mass upon molar mass into delta OS, it is equal to 2. अच्छा, if I want to write things in coulombs, then I will write W upon H M. What is the molar mass of nickel? Does anyone know? निकल का मोलर मास कितना होता है? 58.7 या 59 ले सकते हैं आप, ठीक है ना? 58.7 हम ले रहे हैं टू बी एग्जैक्ट, इंटू 2 इंटू 96500. एवरीथिंग मेक सेंस टिल हियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. ठीक है. नाउ another coulomb you will be getting from this part, that's C is equal to AS. ये भी एक फॉर्मूला है,
C it is equal to A into S. ठीक है. What is the ampere? Ampere is 5. What is second? 20 into 60. है ना? So 5 to the, this will be 100 into 60. This will be 6,000. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Both of these are coulombs. Obviously it's 6,000. That means this value, this is also C, and this value is also C. है ना? ये भी C है. तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है. So we'll write 6,000 is equal to W upon 58.7 into 2 into 96500. Could be cancelled. सीधा W निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? W will be equal to 558.7 into 60 divided by 2 into 965. सही है? तो this will be 30. बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए. ठीक है, एक बार देख लीजिए, सवाल लिख लीजिएगा, है ना? एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन दैट वी हैव रिटन. बेसिकली क्या करना है, एक कूलम आपको किससे मिलेगा? रिएक्शन से, और एक कूलम मिलेगा आपको एम्पेयर एंड सेकंड से. दोनों को आपको इक्वेट कर देना है, बस दैट्स इट. डन एवरीवन? सबने देख लिया? रेज योर हैंड इफ डन गाइस. वेटिंग फॉर खदीजा एंड हिया. यही डन. यस, यही आर यू डन?
Hello, am I audible, guys? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कहाँ है भाई? यस सर, नो सर तुरंत बोल दिया कि नहीं है। अगर नहीं कंप्लीट किया तो नो सर बोल दिया कीजिए। नहीं सर, कर रहा ठीक है, हूँ। हेडफोन उतार दो। ओके ओके, चलिए राइट दिस क्वेश्चन। Just turn your mic on and tell me yes or no sir if you are done with the question. No, sir. I'm writing. Just let me know if you are done, है ना? Once you're done, just say that we are done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Anyone still done? Anyone still writing? No need to raise the hand, just say yes or no. Okay, anyone still writing? Anyone still writing? No one is right. ठीक है, ध्यान से हम लोग आरा सवाल समझते हैं पहले, ठीक है ना? The electrolytic cell A, B, C containing solution of ZnSO4, AgNO3, CSO4 respectively are connected in series. In series, what happens? Current changes or current is the same? Series में क्या होता है बताइए? You must have learned this in 12th standard also, ना? Series connection में what happens? Current is same or current is Current is same. Current is changes? changes, sir. Current is same. नहीं, चेंज नहीं होता, सेम होता है भाई। कहाँ हैं आप? करंट इज सेम इन सीरीज, है ना? देखिए सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टर्स मान लेते हैं अगर इसको हम, जो करंट इस पॉइंट पे है वो करंट इस पॉइंट पे भी है। पैरेलल में क्या होता है, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? सही है ना? यहाँ से करंट इधर मान लीजिए 4 एम्पेयर आ रहा था, दोनों तरफ अगर हमने मान लीजिए 2-2 एम्पेयर का, पता नहीं, आर रखा है, ठीक है ना? यहाँ से 4 एम्पेयर का करंट आ रहा था, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है? चलिए मूविंग ऑन, यहाँ देखिएगा। they are saying 3 electrolytic cell ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3, CSO4, ठीक है? ZnSO4, ZnSO4 में हमको सिर्फ Zn2+ से मतलब है, because that's what is getting deposited. Ag+ से मतलब है और कॉपर 2+ से मतलब है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं ना, लेट मी राइट द मोलर मास ऑफ दीज थिंग्स। Zn का मोलर मास कितना होता है? 65 और 60, इसका होता है 65.3, इसका होता है 63.5, इसका 108, ठीक है? दिया रहेगा जब आप, अगर आप बोर्ड्स के पेपर देखेंगे तो बोर्ड्स के पेपर में आपको मोलर मासेस दिए रहते हैं, ठीक है ना? नाउ मूविंग ऑन, दे आर सेइंग दैट another information is a steady current of 1.5 amperes, that means you have been given the I is equal to 1.5 ampere, was passed through them until 1.45 gram of silver. Mass of Ag is given.
1.45 gram deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? They're basically asking about time. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को वही करना है. वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन विल बी गिवन, वन ऑफ द इक्वेशन विल बी गिवन बाय द रिएक्शन, और दूसरा हम लोग को एम्पियर और सेकंड्स वगैरह से मिलेगा, जो सेकंड हमको निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट द सेकंड. व्हाट इज द रिएक्शन हैपनिंग? Ag plus is getting deposited as Ag. ठीक है, तो फैराडे विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू डेल्टा ओएस. मोल्स के लिए क्या लिखेंगे? मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू डेल्टा ओएस इज इक्वल टू 1. और अगर ये कूलम्स में लिखेंगे तो 96500, 96500. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, what is happening here? Another coulombs will be equal to I, that is equal to I into T. I will be equal to 1.5 into time. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, गिवन मास 1.45 है, मोलर मास ऑफ Ag is 108 into 96500. ठीक है, we can equate this to 1.5 into T. So T will be equal to 1.45 into 96500 divided by 108 into 1.5. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. It is similar to what we did in the previous question, है ना? बस यहाँ पे variable, the unknown was time. In the previous question, the unknown was mass. एक बार देखिए जरा, कॉपी कीजिए and let me know if you understand this or. Done, sir. बाकी लोग बस माइक ऑन करके बोलिए yes or no, done or not. Yes, sir. Done. Yes, sir. All Yes, of you done? sir. Yes, no? Anyone still writing? Anyone still writing? No one is writing. ठीक है, बस हम इसको ना, this is तो अब कैलकुलेशन, अब तो मैथ्स है. This is no more chemistry. So let me just tell you what is the value. इसका जहां तक हमको याद है 860 के अराउंड कुछ आता है, but I will give you the exact value. So 96500 divided by 108 into 1.5. हाँ 863, 863.7 सेकेंड्स. ठीक है, टाइम आ गया. अगला सवाल है इसी में, इफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज सी व्हाट वी हैव सीन इज दैट वी कैन इक्वेट W upon M. तो देख रहा है, एक आपके पास आएगा फ्रॉम रिएक्शन और एक आएगा फ्रॉम एम्पेयर एंड सेकेंड. ठीक है, सो वॉट एवर एम्पेयर, वॉट एवर करंट Ag हैड, सेम करंट कॉपर और जिंक को मिलेगा. क्या ख्याल है गाइस? बिकॉज दे आर इन सीरीज. यस और नो? टेल मी. Whatever was current is, whatever current is flowing through the Ag solution, the same current will flow from copper and zinc solution also, because they are in series. Yes. Make sense? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, and because they are in series, we can also say that the current will be flowing for the same time. The amount of time current flow from the Ag solution, the same amount of time the current will be flowing from the copper and the zinc solution. Make sense? क्या Yes, ख्याल sir. है? सीरीज में है ना, आप रेजिस्टेंस समझ के चलिए, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना आपको, है ना. 5 मिनट के लिए चलाएंगे तो ये सारे रेजिस्टेंस में चलेगा, है ना. इफ आई विल टर्न दिस बैटरी ऑन फॉर 5 minutes, then what will happen? All of these resistors will be, current will be passed from all these resistors for 5 seconds. ठीक है ना, so this is तो not changing.
रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में फैराडे इट इज इक्वल टू मोल्स इनटू ओएस। तो मोल के लिए हम क्या कह सकते हैं, इनटू डेल्टा ओएस। अच्छा, फॉर कूलम 9650। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कूलम्स इज इक्वल टू ए इनटू एस। नाउ आई विल इक्वेट बोथ ऑफ दिस। ठीक है, W अपॉन M into delta OS into 96500 is equal to A into S। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जरा। बेसिकली हम लोग को मास निकालना है ना, ध्यान दीजिएगा। W इट इज इक्वल टू, ठीक है, W किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास इंटू A इंटू S डिवाइड बाई 96500 इंटू डेल्टा OS। यहाँ तक ठीक है, ये सुनो में। Yes, sir. Yes. मैं एक काम करते हैं, एक सेकंड, आई कैन राइट दिस, थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए ऐसे हम लिखें W अपॉन M into delta OS is equal to A into S अपॉन 96500। ठीक है, हम मेरे कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, दिस पार्ट A into अपॉन 600 will be same for A and same, first ampere is same for all of them, second is same for all of them, 96500 is a constant, it will be same for all of them। क्या ख्याल है guys? Yes, sir. ठीक है, तो if this whole thing is same for a copper, Ag and zinc, this will also be same copper, this whole thing. The mass deposit for Ag will be different than copper and zinc. Molar mass of Ag is different than copper and zinc. The change in oxidation state will be different for E, copper and zinc. वो value will be same because LHS RHS same है। समझ में आ रही बात, थोड़ा समझ में आ रहा है, सुनो। Sir, your voice was breaking. Can you My repeat? voice is breaking. Yeah, sure, sure. Just give me a second. Let me fix the voice thing first. How is it now? Is it any better? Yes. What I was saying, if the RHS is same for all of these, the L is same for copper, Ag and zinc. क्या ख्याल है, सोच रहा, सोहा, मरियम, अन्ना, खदीजा एंड नोहा। Yes, sir. समझ में आ रही है ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। We can say that W into delta OS divided by M इसके लिए Ag के लिए will be equal to W into delta OS upon M इसके लिए कॉपर के लिए be equal to W into delta OS इसके लिए डिवाइड बाई मोलर मास इसका, जिंक का। ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। जैसे Ag के लिए गिवन मास वाज 1.45, डेल्टा OS वाज 1, मोलर मास वाज 108, फर्क निकालना है। तो W वी नीड टू कैलकुलेट W। कॉपर के लिए क्या होगा, वी आर गोइंग फ्रॉम Cu2 प्लस टू Cu, तो डेल्टा OS इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर। ये किसके लिए, कॉपर के लिए। सिमिलरली इफ यू वांट टू गो फ्रॉम फॉर जिंक Zn2 प्लस से Zn जा रहे हैं हम लोग, तो वी कैन राइट सेम थिंग। Ag का हम लोग को पता है ना, Ag और जिंक को हम लोग इक्वेट कर देंगे। वी कैन इक्वेट दिस 1.45 into 1 upon 108 it is equal to W into 2 divided by 65.3। तो जो W यहाँ से मिलेगा, W it will be equal to 63.5 into 1.45 divided by 108। This will be the mass of copper।
and mass of zinc will be equal to 65.3 into 1.45 upon 108. कॉपी कीजिए जरा, एक सेकंड, कुछ और छूट गया, एक सेकंड, इंटू 2 भी होगा ना, 63.5 108 इंटू 2 होगा, यहाँ भी 108 इंटू 2 होगा, दैट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोल गया हम यहाँ से, है ना. कॉपी दिस डाउन. ऊपर वाला कर लिया, सेकंड वाला कर लिया था ना आप लोगों ने, जी हाँ. मास ऑफ कॉपर एंड जिंक कर लीजिए. Anyone still writing? Anyone still writing? No one is writing. सबका हो गया? ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना कितना आ रहा बताइए. All of you done, guys? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो दी वैल्यूज विल बी क्वाइट सिमिलर फॉर कॉपर एंड जिंक ना, एज यू कैन सी
63.5 है और वहाँ पे 65.3 है. So let me tell you the values. So for copper it will be, what happened? Pentile is not working. Yeah. For copper it will be 0.426 grams, and for zinc this value will be 65.3 करना ना. This value will be 0.438, ठीक है, grams. So we have done a lot of questions, है ना, and just try to repeat all of these questions. And next class we will be doing conductance. So hopefully in 2 more classes this chapter will be over. ठीक है.